Good morning, students. Good morning, and welcome to the Legal Game presented by Unacademy. As I have always said, they're saying that Legal Game is the leading e-learning platform for a law entrance examinations. Yes, it's the best platform available over YouTube for your for the preparation of your law entrance examination. And yes, An Academy is obviously the leading e-learning platform for any entrance examination, and law is no exception to it. Because here at An Academy, we make your learning easy, effective, efficient, and interesting. I'm Sarthak Sharma. I'm your legal reasoning expert at this wonderful platform. And today I have come up with a very important session. In this session, I'm going to give you a brief intro of the constitutional law. Yes, out of all the laws of this land, हमारे देश में जितने भी कानून हैं, उनमें the most important, the most powerful, the strongest, and the supreme law of the land is the constitution, and that's why constitutional law becomes a major part of a law entrance examination syllabus. आपके किसी भी law entrance examination के syllabus के सबसे major parts में से भी जो सबसे ज्यादा major है, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है the constitution of India. So we are going to डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. हम आज से शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में के ऊपर. रोज एक क्लास हमारी जरूर होगी. एंड इन द इनिशियल क्लास आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू इंट्रो of the constitutional law, that what this constitution of India is actually, and how the constitution of India came into being. The constitution of India, भारत का संविधान. So let's start with this wonderful class, and before proceeding I will just take 10 seconds to switch on the live chats, because yes, the live chats makes our classes an interactive classes, and I've always waited upon this fact that for me my classes would be just like a communication panel where I communicate with you and you communicate with me. I learn something from you, and similarly you learn something from me. Okay, the live chat is on my screen. Yaneshwar, hi, good morning. I hope you all celebrated Diwali well, without crackers, and it was a safe and happy Diwali. I wish you all a very happy festival of this week of festival, sorry. Of Diwali was the festival of this week because it was the biggest festival of this week, but all the festivals are like today also and tomorrow also we are going to celebrate festivals. So I wish you a very happy week of these festivals. Okay, students, let me give you a short intro of myself. I am Sarthak Sharma. My name is Sarthak Sharma. I hope you are habitual with this name now. I am a penultimate year law student at Faculty of Law, Jamia Millia Islamia. This institution had continuously been among the top performing institutions in the field of law according to an IRF ranking. I have more than 2 years of teaching experience, and for me, each day count. I am again happy because today I am going to add one more day in my teaching experience. I have mentored more than 10,000 students, and my students have been of this opinion that Sarthak sir had not been a mentor or a teacher but a companion in our preparation journey. I admit this thing. I have been companion. Thank you, Dhaneshwar, for your heartiest wishes. आपको भी हैप्पी दिवाली. मैं भी इस बात पे एडमिट करता हूँ दैट आई हैव बीन अ कंपेनियन विद माय स्टूडेंट्स इन देयर प्रिपरेशन जर्नी. उनकी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन जर्नी में मैं उनका कंपेनियन, उनका साथी रहा हूँ. एंड विद देयर हार्ड वर्क and my experience, we have converted their hard work into smart work, and by God's grace a lot of my students have been rankers in the top law entrance examinations of this nation, like the Common Law Admission Test, like the Symbiosis Law Admission Test, Banaras Hindu University's BLED, JMI Law Entrance Test, AILET, MHSET, and a lot more. So I hope you all are also eager to add your name in this list. And बिल्कुल आप और मैं हम मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि आपका नाम भी इन इस लिस्ट में ऐड हो जाए. The rankers produced by me. Students, you can join me on Telegram if you have not till now. The link is on your screen and also in the description box. So just access the link and join me on Telegram, because there I will discuss a lot of stuff. You can subscribe to an academy for either of the following term for 1, 3, 6, 9, 12, 18 or 24 months. Definitely जब हमारे शरीर में किसी विटामिन की कमी पड़ती है तो हमें अलग से बूस्टर डोज लेनी पड़ती है विटामिन की, लाइक द कैप्सूल्स एंड ऑल. सिमिलरली दिस सब्सक्रिप्शन ऑफ एन अकेडमी, अगर आपको प्रिपरेशन में कुछ भी कमी लग रही है, देन an academy is a platform that will boost up your preparation.
There is a no cost EMI offer as well for those students who do not want to pay in lump sum. And right now there is a hefty discount. Diwali chal rahi hai, so yes, the sale is going on. There is a wonderful discount, and in addition to all these regular discount, an additional 10% discount is also there. You just need to use the code SRT10 and avail the discount. You can use this code SRT10 to avail free features of Unacademy as well. Just download the Unacademy application. It will ask for an invitation code. In the invitation code as well, you can write down SRT10. तो सभी फ्री फीचर्स एन अकेडमी के आपके लिए ओपन अप हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दिस कोड इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. SRT is the short form of my name. Sarthak is my name. So SRT, and you can have a look over the unique features of an academy. These six are among a lot more unique features. So you may, if you will enroll for an academy, you will be able to avail all these features. Some of the features are free of cost as well. So उसके लिए कुछ नहीं करना है, just download the Unacademy application. The link of my profile is there in the description box. If you will click on the link, the Unacademy, after downloading the Unacademy application, you will be able to see my classes. I have taken a lot of special classes that are free classes on an Academy platform. Okay, my favorite feature on this application is the live quiz feature for the students. What is this feature? In this feature, the students can obviously participate in the live quiz, but at the same time, they can also host their own quiz. So yes, an academy is of the ideology that no one knows everything, but everybody knows something. सब कुछ तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ जरूर जानता है. And that's why for those students who think कि उनको एक particular subject में महारत हासिल है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको ऐसी बातें पता है, ऐसे टॉपिक्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जो शायद किसी और को ना हो. So they can host their quiz and help their fellow mates to grow their knowledge. And yes, your fellow mates will also do the vice versa. So सबका साथ सबका विकास अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे इस फीचर के साथ बिल्कुल हो रहा है. Students, I hope you all are appearing for the Unacademy Law Aptitude Test. It is a 60-minute, 60 questions and 60 marks test which is conducted every Saturday at 11 a.m. and also the weekly T20 test. We hope that Afghanistan versus New Zealand, may Afghanistan beats New Zealand, because that's the only way in which India still has a chance to qualify for the semi-finals. But yes, on theme of World T20, we have come up with weekly T20 test. Weekly T20 test. Just like we are hoping that India will bring the trophy home, we are also hoping that you will also bring the trophy home. And the trophy for you is All India Rank 1. Nothing else. AIR 1. And AIR 1 की अगर ट्रॉफी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी. आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी जिसमें कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश फास्ट होने के बाद भी हार जाता है. डू यू नो व्हाई? बिकॉज द रीजन वाज नॉट दैट द टॉर्टोइस वाज स्लो. द रीजन वाज दैट ही वाज स्टेडी, ही वाज कंसिस्टेंट. सो ये जो कहानी, ये जो कहावत है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. जस्ट एलिमिनेट स्लो. आप स्लो हो या फास्ट हो फर्क नहीं पड़ता. ओनली अ स्टेडी पर्सन विंस द रेस. स्टेडी मीन्स कंसिस्टेंट. सो आपकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए वी हैव कम अप विद दिस quick 20 minutes revision test for a everyday practice. 20 minutes, 20 questions and 20 marks. There are 5 sections in your law entrance examination, and every weekday is devoted to one section. Like Mondays for English, Tuesday comes up with quant, Wednesday logical, Thursday legal, and Friday is current affairs and GK. It is open for everyone. The students who are not even the paid users, they can also appear for it. You just need to download, and when you will download the Unacademy application, if you want to go for the free features as well, then invitation link will be asked. And in that invitation link आपको कुछ टाइप करना होगा, उसके बाद ही आपकी फ्री फीचर्स भी आप अवेल कर सकते हैं. सो जस्ट टाइप SRT10. all the free features will be unlocked for you. Student special class feature, so you can have a look over the special class feature, and special classes are free classes on Unacademy. If you do not know, आपको इनके लिए कुछ पेमेंट देने की जरूरत नहीं है. I have taken a lot of special classes on Unacademy application. I will be taking in the future as well. The special classes are in recorded format as well. So I will suggest you to go to my profile on Unacademy and watch my special classes. Okay, let's start with the class. As I said, the topic of the class is Introduction to Constitutional Law. इसको समझना जरूरी क्यों है? See, इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, all the famous personalities, there was only one ingredient which was common in all. बाकी तो उनकी पर्सनैलिटीज डिफर कर सकती हैं,
but there was one ingredient that was common in all of them. It was curiosity. उनमें जिज्ञासा थी किसी चीज को जानने की. They had curiosity. एक आम आदमी में और एक सक्सेसफुल आदमी में सिर्फ एक ही फर्क होता है. देयर इज वन डिफरेंस इन अ कॉमन मैन एंड अ सक्सेसफुल पर्सन, अ फेमस मैन. दैट इज कंफ्यूजन एंड क्यूरियोसिटी. ओके, उस वही फर्क है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट और एक नॉट सो सक्सेसफुल स्टूडेंट में. ओके, confusion is something which is in the mind of 99.99% of the people. 99.99% of the population is confused and only 0.01% of the population is curious. That's why successful people, when we compare it to the common people, are so less. So yes, my motive through my classes is to convert your confusion into curiosity. मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपकी confusions को curiosity में convert करूं. एक टीचर का काम होता है confusions को आंसर करना, बट मैं my motive is not only to answer your confusions but to convert them into curiosity. Confusions खत्म करनी है और curiosity को पैदा करना है. Curiosity means जिज्ञासा, जानना कि हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं. And these three questions are the mother of curiosity. When you are studying something, when you are doing something, when you are thinking something, तो किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचते हुए, उसको पढ़ते हुए, ये तीन सवाल उसके बारे में जरूर आने चाहिए. अगर नहीं आ रहे हैं तो आप क्यूरियस नहीं है. एंड यू नीड टू बी क्यूरियस. What is this? Why is this? And how to do this? If you are studying Introduction to Constitutional Law, then first of all you should know that what is constitutional law, why you are studying it, पढ़ ही क्यों रहे हैं, and how to study it with utmost efficiency. So first of all I am going to answer these three questions. And remember, whenever you are studying something, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो उस particular topic का what, why and how सबसे पहले क्लियर होना चाहिए. उसके बाद कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा. Because these three are the mother of curiosity. वो जिज्ञासा की रूट्स हैं ये तीन क्वेश्चंस. Okay, so what is constitutional law? Simply, first of all, what does the word constitution means? Every word explains its meaning itself. इस दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो अपना मतलब खुद ना बताए. From the Latin language to the English language to the Hindi and Sanskrit as well. I have told you this thing that Latin language is the Sanskrit of Europe, just like there is Sanskrit language in India. इंडिया में संस्कृत है. इंडिया की सभी लैंग्वेजेस संस्कृत से ही निकली हैं, whether it's उर्दू और हिंदी. Similarly, Latin language is the Sanskrit language of Europe. यूरोप की जितनी भी लैंग्वेज है, whether it's English, whether it's French, Greek, all these languages have been derived from the Latin language. So हर शब्द अपना मतलब खुद बताते हैं. The word constitution had also been derived from the Latin language. Like I have told you this thing, in Audi Altem Partem is a legal maxim. Audi Altem Partem. Audi is a Latin word which means to hear. अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक बहुत ही फेमस इंग्लिश वर्ड है ऑडियो. ऑडियो वो होती है जिसे हम सुनते हैं. So Audi is a Latin word which means to hear, means to listen. That's similarly constitution. What does constitution means? It literally means to constitute or to establish. Okay, constitution literally what does constitution literally means? It means to constitute or establish. So a constitution is a document that establishes a particular state or that constitutes a particular state. Constitute मतलब बनाना. Constitute मतलब बनाना. Obviously, like a human body is constituted of uh, a nose, two eyes, a face, neck. These are the constituents of the constituent of human body. Okay, the body, the organs, the internal as well as the external organs of the human body are the constituents of a human body, and these constitutes a human body. Similarly, constitution means a document that constitutes a whole nation. Constitution of India ही बताता है कि यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत किस जगह को कहा जाएगा. इट सेज दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और एक पूरी लिस्ट दे रखी है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंस्टिट्यूट्स अ पर्टिकुलर स्टेट, और यू में से एस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर स्टेट. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स अ डॉक्यूमेंट, अ लॉ दैट कंस्टिट्यूट्स इंडिया. वही तो बताता है कि इंडिया क्या है. आर्टिकल 1 स्टार्ट्स विद India, that is Bharat, shall be a union of states and union territories.
एंड देन इन आर्टिकल 2 देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब कैसे पता चलेगा कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स आती है? बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उन सभी स्टेट्स का एरिया भी लिखा हुआ है। whenever a new state is formed there is an amendment to the constitution. Okay, whenever a part from a foreign land is taken or given to them there is amendment in the constitution. जी बेरुबारी यूनियन केस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करूंगा। ओके, आई विल डिस्कस द चाइनाज इन्वेजन एज वेल, जब कैलाश मानसरोवर का एरिया उनके पास चला गया था। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस थिंग दैट एस्टेब्लिशेस अ नेशन। एक देश को, एक कंट्री को, एक स्टेट को एस्टेब्लिश करने वाला डॉक्यूमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन और स्टेट होता है। ओके, व्हाई डू वी स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन? ऑब्वियसली बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। देयर आर अ लॉट ऑफ लॉज ऑफ दिस लैंड। इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, देयर आर 1000+ लॉज, राइट? बट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। व्हाई? Because every law of this nation, whether they are pre-constitutional or post-constitutional, I hope you know that what is a pre-constitutional law and what are post-constitutional law. Pre-constitutional laws means जो constitution के enforce होने से पहले बने थे, means those laws that were made by Britishers. हमारे देश में आज भी 90% of the laws, 90% of the major laws are pre-constitutional. Like the IPC, like CRPC, like CPC, like Indian Evidence Act, like Indian Contract Act, ये सभी 1800s के laws हैं। These are pre-constitutional laws made by Britishers. Post-constitutional laws means those laws that were made after the enactment of the Constitution. जो 26 जनवरी 1950 के बाद बने वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो 26 जनवरी 1950 से पहले बने वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है। बट एवरी लॉ ऑफ दिस नेशन, वेदर इट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, शुड बी इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हर एक प्रोविजन के साथ कंफर्मिटी में होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब एक देश में जिसमें कोई राजा है, अगर पर प्रजा का मींस पब्लिक का कोई भी इंसान राजा के अगेंस्ट जाएगा, देन ऑब्वियसली ही वुड बी पनिश्ड, ही वुड बी थ्रोन आउट फ्रॉम द नेशन। सो इस देश का राजा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हर एक लॉ इस देश का, एवरी सिंगल लॉ ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, every single law of this nation of India should be in conformity with the constitution. अगर कोई भी ऐसा लॉ आता है, कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी भी प्रोविजन को वॉयलेट करता है, देन इट वुड बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस। आई विल डिस्कस these two words in the coming slide, ultra vires and intra vires. But right now, I hope these two questions are clear. That what is constitution? Constitution is a document that constitutes or established a nation. And why do we study constitution? Because it is the supreme law of the land. Okay, जो सबसे ताकतवर चीज है उसी के बारे में पढ़ा जाता है ना। So it is the supreme law of the land. Not all law of the land are important for your law entrance, but obviously the supreme law, जिसकी conformity में बाकी सभी laws होने चाहिए, वो important है। And now the third question, how to study constitution. So guys, I hope you have heard this statement that the Indian constitution is a living document. It is a living document. It is not just a book of papers. It is not just a book in which there are 395 articles, 25 parts and 12 schedules. सिर्फ ये एक particular bunch of paper नहीं है. It is a living document. Indian constitution is a living document because it is constantly changing and it is going to change in the future as well. ये बदलता जा रहा है. It is a dynamic document. Dynamic means constantly changing. Because it is a dynamic document, it's a living document. That's why आप इसको एक किताब की तरह नहीं पढ़ सकते हैं. If you will try to study Indian Constitution as a book, then you will fail. Why? Because first of all, it is a living document. Secondly, it is world's lengthiest constitution. ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. 395 आर्टिकल्स को समझना, 25 पार्ट्स को समझना और 12 शेड्यूल्स को समझना इजी नहीं है. हालांकि आपको ये सब समझना भी नहीं है. There are only important things in the constitution that you need to learn for your law entrance examination. Still, because it's a living document, so I will suggest you that study it like a story. एक जीते जागते इंसान की जिंदगी को जानना है तो कहानी के रूप में जानिए. ये भी तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट ही है. So we will study the Indian Constitution
like a story that it would so that it would be easy for you to understand. आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना. Okay, moving forward, I hope the questions are clear that what, why, and how. What is the Constitution? Why we study Constitution? Why Constitution is so important and how to study Constitution. Moving forward, if you have any doubt in between the class, आप मुझसे पूछ सकते हैं. The live chat is open for you, so you can raise any doubt if you have. So before proceeding, मुझे दो words बिल्कुल clear करने हैं. The first is ultra bias and another is intra bias. So what does ultra bias means? Bias is a Latin word which means authority or power. Bias means authority or you may say power. What does ultra means? Ultraviolet rays. साइंस में पढ़ी होंगी. Ultra means beyond. Similarly, what does intra means? आपके स्कूल में इंट्रा स्कूल गेम्स भी होते होंगे और इंटर स्कूल भी होते होंगे. सो इंट्रा मीन्स विद इन द स्कूल. इंट्रा स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यू ऑल माइट हैव participated in inter school sports activities in your school. So इंट्रा स्कूल क्या होता था? जो स्कूल के अंदर होते थे. इंटर स्कूल जो दो स्कूल्स के बीच में होते थे. So intra means within. Okay. So ultra bias means beyond or outside the authority of the constitution. Whenever a law is made, उसकी constitutionality के ऊपर अगर क्वेश्चन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्ट analyzes this thing that whether the law is ultra biased to the constitution or intra biased to the constitution. If a law is ultra biased, then it is declared void. And if a law is intra biased to the constitution, then it is valid. इस दुनिया इस देश का इंडिया का हर एक कानून इंट्रा बायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए वो फोर्स में है. इफ दैट लॉ इज अल्ट्रा बायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट वुड बी वॉइड. फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू एन इजी एग्जांपल. Let me give you an easy example. There are a lot of fundamental rights. One of the fundamental right is one of the fundamental right is freedom of speech and expression. And if government comes up with a law in which the freedom of speech and expression is taken away from the people of India, then that particular law, that particular act of parliament would be ultra biased to the constitution and hence it would be declared void. Clear? So इस देश में जितने भी laws हैं वो चाहे प्री एग्जिस्टिंग हो या फिर बाद में ऐड किए गए हो. प्री एग्जिस्टिंग मींस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड on 26 January 1950. These laws were already existing or they are post constitutional. Post constitutional means that were not already existing but that were made by the parliament. Parliament का काम ही है law बनाना. Parliament means legislature. Legis means law. Lature means house. House of law. Legislature is the law making body of the nation. इनका काम ही law बनाना है. Okay, so whenever the legislature means the parliament of India makes the law and that bill becomes an act after getting assent from the president, तो उस bill के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है that whether it's ultra bias or intra bias. If it is intra bias, it is valid. If it is ultra bias, it is void because ultra means beyond the powers of the constitution, beyond the ideals of the constitution. A law that breaches the authority, the power, the ideals of the constitution. Intra means within the authority that the constitution gives. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी भी प्रोविजन के वायलेशन में अगर कोई लॉ है तो वो अल्ट्रा वायस, तो उसे कहा जाता है दैट द लॉ इज अल्ट्रा वायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस वाइड. एंड इफ अ लॉ इज within the authority of the constitution, it does not violate any constitutional value, instead it fulfills or it is in it is in consistency with a particular constitutional provision, then it is intra bias. Okay, like let me give you one more example. Article 15 clause 3 and 4 talks about affirmative action. Affirmative action में वो कहते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए लॉज होने चाहिए. अब बहुत सारे लॉज ऐसे बने. देयर आर अ लॉट ऑफ लॉज रिलेटेड टू रिजर्वेशन. They are intra biased to the constitution because they are in conformity with article 15 clause 3.
Similarly, child empowerment laws like the POXO, like Right to Education Act, it is a fundamental right as well. Okay, women empowerment के लिए there are specific laws for women, reservation for women. So what are these laws? इन सब laws की sanctity कहाँ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में इनकी sanctity है. Affirmative action, which is a fundamental right in Indian constitution. When we will discuss about fundamental rights, तब मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा. Okay, so all the laws of this nation should be intra-bias and no law should be ultra-bias. If a law is ultra-bias, then it is simply void. Whether the law is pre-constitutional or post-constitutional means made after enactment of the constitution, made after 26 January 1950. You are clear with it? I hope you are clear with these two words, ultra-bias and intra-bias. आप किसी भी लॉ को इस इंडिया के अंदर हमारे देश के अंदर जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट के लॉज हैं वो सब इसलिए हैं क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट द स्टेट शुड मेड लॉज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. जितने भी चाइल्ड एम्पावरमेंट के लॉज हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लॉज हैं, दोज लॉज those laws are also made, those child empowerment laws are also made because of that article 15 clause 3. Similarly, affirmative action में ही Indian Constitution also says that reservation, there shall be reservation for women, there shall be reservation for children and for backward classes. So उन backward classes के upliftment के लिए जितने भी laws बनाए गए हैं, whether it's the SC/ST Act, whether it's any particular reservation act, so उसकी sanctity भी Indian Constitution के ही article 15 से आती है. Clear till here? Let's move forward. Introduction to constitutional law. So let me discuss some important doctrines. Although I will take special session on these important doctrines of the Indian Constitution, but still मैं कुछ स्पेशल क्लासेस जरूर लूंगा जिसमें मैं आपको सभी डॉक्ट्रिन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्कस करूंगा. बट राइट नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अ होमवर्क एंड दिस होमवर्क इज that I am going to tell you that what are the important doctrines of the Indian Constitution that you need to study. And before that, आपको समझना है कि doctrine होती क्या है. The word doctrine is derived from the word doctor. The word doctrine is derived from the word doctor, which means a teacher. Doctor means a teacher. Doctor in Latin language, doctor means a teacher. So doctrines are teachings in law. Doctrines are simply teachings in law. And the important doctrines of the Indian Constitution that you need to study is doctrine of severability. It is also known as doctrine of separability. I will discuss it in a special class. Doctrine of eclipse. Eclipse मतलब ग्रहण लगना, like lunar eclipse and solar eclipse. तो हाँ, ये बिल्कुल उसी से related है. Doctrine of eclipse is very important. I will discuss it as well in another class, in which the class will specifically be devoted to the important doctrines of constitutional law. Doctrine of territorial nexus, yes, and doctrine of leges, doctrine of waiver, doctrine of judicial review, and doctrine of basic structure, and one more, doctrine of harmonious construction. So these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These 8 doctrines are very important for a law entrance examination. ये 8 doctrines बहुत ज़्यादा important हैं आपके law entrance examination के लिए. और इन 8 doctrines को हम एक specific class, I will take a special class on important doctrines of constitutional law. In that class, I will discuss all these doctrines. But right now, it's your homework that before, जब हम खुद टीचर के पढ़ाने से पहले हम किसी चीज को पहले से पढ़कर आते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. So I will suggest you that go and read these 8 doctrines in detail before I teach you. It's your homework. I will in very soon I'm going to take a class either on the app or on the YouTube in which I will discuss all these important doctrines. Let's start with the making of Indian Constitution. Indian Constitution का अगर introduction जानना है तो हमें सबसे पहले उसकी making जाननी होगी ना, that how the Indian Constitution was made. I just said that Indian Constitution is a living document. And what do you mean by living document? That Indian Constitution is
was made and it is still developing. It is a dynamic document. So let me give you a short intro of the making of the Indian Constitution. So the idea of Constituent Assembly कि सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने. Like every person in this world has a particular origin, और वो origin है हमारी mother जिन्होंने हमें पैदा किया. Simply the Indian Constitution, the Constitution of India was made by the Constituent Assembly. So सबसे पहले Constituent Assembly का होना जरूरी है. An assembly that made the Constitution. So the idea of Constituent Assembly and framing of a constitution was initially put forth by M.N. Roy in 1934. 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, who was a communist leader and also who was not from Indian National Congress, he was a communist leader. इन्होंने 1934 में ही कह दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए. 1934 में द आइडिया, फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ making a constitution and a constituent assembly was given in 1934 by Manabendra Nath Roy or M.N. Roy. He's a very famous personality, and you need to know about him for a law entrance examination. A question aa sakta hai isse related, and it was also supported by Indian National Congress. And M.N. Roy ने ही first draft Indian Constitution publish किया था. He also published nation's first draft constitution in 1944, and the name of it was M.N. Roy's Constitution of Free India. M.N. Roy's Constitution of Free India draft. The Constituent Assembly was formed on 16th May 1949. Remember, Indian Constitution को तो Constituent Assembly ने बनाया और Indian Constitution 26 जनवरी 1950 को enact हुआ. 26 नवंबर 1949 को complete हुआ, ये सबको पता है. But the Constituent Assembly was formed on which date? It was formed on 16th of May 1946. It's the date on which the Constituent Assembly was formed. Remember this date. The Constituent Assembly was formed on 16th May 1946 and under which plan? Under the Cabinet Mission Plan. सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था. द क्रिप्स मिशन फेल्ड. आफ्टर द क्रिप्स मिशन द कैबिनेट मिशन प्लान केम. कैबिनेट मिशन प्लान भी पार्टीशन राइट्स की वजह से फेल हो गया, बट कैबिनेट मिशन प्लान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंस्टिट्यूट हो गई थी अंडर 16th May on 16th May 1946. Later on, partition rights happened, and due to those partition rights, the British India was divided into Pakistan and India. Bangladesh was also East Pakistan at that time, and due to that, the Cabinet Mission Plan was superseded by Indian Independence Act. We will discuss this hierarchical order in another class. Right now, remember that Constituent Assembly, जिसने Indian Constitution बनाया, it was formed on 16th May 1946 under the Cabinet Mission Plan. According to the Cabinet Mission Plan, जब Cabinet Mission Plan के अंडर Constituent Assembly बनी थी for the British India. Remember that under Cabinet Mission Plan, the Constituent Assembly was made for the British India. Under the Cabinet Mission Plan, the Constituent Assembly was made for the British India. The total strength of it was 389, out of which 296 were from British India, means India and Pakistan both, the present day India and Pakistan both, and 93 seats were from princely states. So Constituent Assembly बनी Cabinet Mission Plan के अंडर. Constituent Assembly की first meeting भी हो गई. But then what happened? After the first and second meeting of the Constituent Assembly, partition riots broke out. And due to those partition riots, the Constituent Assembly was dissolved. And a new Constituent Assembly was made under Indian Independence Act. I'm going to discuss it in the coming session, not coming slides only, आज ही की class में. So when the election took place, the Congress won 208 seats. Out of 296, 73 seats were won by Muslim leagues and 15 by others. ये पूरा Constituent Assembly का जो इंडिया की पहली Constituent Assembly थी. The first Constituent Assembly of India was of 389 members. But it is not the same Constituent Assembly जिसने Constitution of India बनाया. Constitution of India बनाने से पहले Constituent Assembly dissolve हो गई. Finally, what happened? The Constituent Assembly that was made under Cabinet Mission Plan, it was formed, meetings हुई, but partition riots हो गए, जिसकी वजह से इंडिया का हो गया partition. नाम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, बट इस एक्ट ने इंडिया को पार्टीशन नहीं, इंडिया को सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं, उसका पार्टीशन भी किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, द ब्रिटिशर्स वर ऑफ दिस ओपिनियन that until and unless under the cabinet mission plan, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप
इंडियन लीडर्स हमारी प्रोटेक्शन में, मतलब ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी कंप्लीटेड वी विल गो फ्रॉम योर नेशन, एंड अंटिल एंड अनलेस यू हैव कंप्लीटेड योर कॉन्स्टिट्यूशन, हम आपके नेशन में रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि कोई दूसरा देश आके आप पर रूल ना करने लगे. That was the motive of the Britishers. But what happened, and it was actually a genuine, a good motive. But what happened due to the partition riots? Britishers ने कहा that now we are not going to stay in India, we are going away and we are just giving you independence. अब आप इसके बाद डोमिनियन स्टेटस में रहो और अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाओ. And that's why in 1947 the cabinet mission plan was finally scrapped on 3rd June 1947 due to the partition riots. Britishers decided कि now we will not protect the India and Indian leaders. हम उनको उनके हाल पर छोड़कर जा रहे हैं. And the Britishers finally decided to give us independence. उनका पहले भी मकसद इंडिपेंडेंस देना था. मींस कैबिनेट मिशन प्लान वाज अ बेटर प्लान. Cause under cabinet mission plan, they were just saying that we are in India, we are रूलिंग इंडिया, एंड इंस्टेड ऑफ रूलिंग वी आर प्रोटेक्टिंग इंडिया. हम इंडिया में रहेंगे तब तक जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता. कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मकसद था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. ब्रिटिशर्स ने कहा कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाती है, मींस अंटिल एंड अनलेस यू आर अ रिपब्लिक नेशन, वी विल प्रोटेक्ट यू सो दैट नो अदर आउटसाइड नेशन विल कम एंड रूल यू, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहे. बट इंडिया में पार्टीशन राइट्स हुए बिकॉज मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे. एंड आफ्टर दैट partition riots, the cabinet mission plan was scrapped. Britishers decided that they should leave the nation now. They they just withdrew the decision that they will protect India and they just gave us independence. और independence के लिए ही cabinet mission plan को supersede किया Indian Independence Act 1947 ने, जिसने इंडिया को independence दी. Once India was independent, once India was independent, it was also divided. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने ही पार्टीशन भी किया इंडिया का इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड लेटर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द प्रेजेंट इंडिया वाज रिकंस्टिट्यूटेड. इट वाज रिकंस्टिट्यूटेड विद अ न्यू स्ट्रेंथ of 299, of which 229 represented the British India and 70 represented the princely states. Okay, so the Constituent Assembly was reconstituted and the strength was reduced. So जो इंडिया की पहली Constituent Assembly बनी, ब्रिटिश इंडिया की Constituent Assembly, उसके members थे 389. ब्रिटिश इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389 की स्ट्रेंथ थी, एंड द प्रेजेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ स्ट्रेंथ ऑफ 299. 9 December 1946 was the date on which the first meeting was held of the Constituent Assembly, and this Constituent Assembly was for the British India because it was in 1946. Partition riots happened in 1947, and on the first meeting, Dr. Sachidanand Sinha was made the interim president, means temporary president. The reason was that he was the oldest member of the Constituent Assembly, and it was a French practice कि किसी भी एसोसिएशन के चेयरमैन ओल्डेस्ट मेंबर ही बनेंगे. तो इस फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट, मींस टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. 11 December 1946 is the date. 11 December 1946, second day of the meeting of the first session, and in that Dr. Rajendra Prasad was made the permanent president. Actually, at that time he was permanent chairman. क्योंकि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अनडिवाइडेड इंडिया की थी. When the Constituent Assembly was reconstituted, the position of chairman was renamed as president. Now, I've seen this thing that a lot of questions, a lot of students guess this thing कि Constituent Assembly के vice president, Constituent Assembly के vice president सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे होंगे. नो. एंड डू यू नो व्हाट इज द रीजन दे यूज? वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट बने. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सिमिलरली सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट बने? नो. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एच.सी. मुखर्जी. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. सो दिस रीजनिंग इज रॉन्ग. Dr. Rajendra Prasad was the first permanent chairman and the first president of the Constituent Assembly. For the undivided India, जो Constituent Assembly थी with 389 members,
उसमें चेयरमैन की पोजीशन थी. But when it was reconstituted into a new constituent assembly for the present India with 299 members, the position of chairman was renamed as president. तो chairman से rename की गई थी president. The constituent assembly was in the opinion that 22 different committees should be formed to deal with the different tasks of making the constitution. 22 different committees बनाई जाए and a total of 11 sessions were held by the constituent assembly. और इन ये 11 sessions हुए for the period of 2 years 11 months and 18 days. 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट को कंप्लीट होने में. It was finally completed on 26 November 1949. Let's discuss the term of the 11 sessions. ये बहुत जरूरी है जानना. So the first session was from 9th of December to 23rd of December in 1946, and this session was held by the Constituent Assembly of 389 members, जो अनडिवाइडेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी. द ब्रिटिश इंडिया 25 January 20 to 25 January 1947 was the tenure for the second session, and it was also the Constituent Assembly of British India. 28th April to 2nd May 1947, it was also the Constituent Assembly of British India, the third session. Fourth session was from 14th of July to 31st of July 1947. From now here onwards, the Constituent Assembly that met from the fourth session onwards was a Constituent Assembly of present India with 299 members. Clear? So this Constituent Assembly from the fourth session onwards, the Constituent Assembly that met was of present India with 299 members, because यहाँ पर बीच में partition rights हो गए, जिसकी वजह से कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनी ही कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर थी. व्हेन द कैबिनेट मिशन प्लान फेल्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केम एंड अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड. द होल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज दैट सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया. Although I hope you know this thing, and if you do not know, I will teach you in a separate session. Cripps mission failed and it was replaced by cabinet mission. Okay. Then cabinet mission also failed, and cabinet mission was replaced by Indian Independence Act. Indian Independence Act finally replace किया गया Constitution of India से. All of them are successors of each other. Cripps mission जैसे ही फेल हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट शुरू हो गई, द क्विट इंडिया मूवमेंट. इन 1942 क्रिप्स मिशन फेल्ड. क्रिप्स मिशन आया क्यों था? वर्ल्ड वॉर की वजह से. द होल स्टोरी, इस सभी की स्टार्टिंग हुई वर्ल्ड वॉर सेकंड से. वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान वाज ट्राइंग टू एंटर इंडिया एंड ब्रिटिशर्स को इंडियन सोल्जर्स की हेल्प चाहिए थी, इसलिए ब्रिटिशर्स क्रिप्स मिशन लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपको गवर्नमेंट बनाने का मौका देंगे, आप हमारी हेल्प कीजिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में. क्रिप्स मिशन फेल हुआ. आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट को की वजह से ब्रिटिशर्स पे प्रेशर आया एंड दे केम अप विद कैबिनेट मिशन. कैबिनेट मिशन आल्सो फेल्ड ड्यू टू पार्टीशन राइट्स एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केम. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इंडिपेंडेंट तो किया, बट हम रिपब्लिक तो नहीं थे, एंड इफ वी आर नॉट रिपब्लिक देन वी आर नॉट सेफ. कोई भी हम पे आके रूल कर सकता था. दैट्स व्हाई द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज फाइनली सक्सीडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कैबिनेट मिशन प्लान अगर फेल ना होता तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता ही नहीं, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता, जो इंडिया को इंडिपेंडेंट भी करता और रिपब्लिक भी करता. बट ट्रेजेडी जो हुई पार्टीशन राइट्स, उसकी वजह से पहले हम इंडिपेंडेंट हुए और बाद में रिपब्लिक हुए. ब्रिटिशर्स का मोटिव था दैट एट द सेम टाइम वी विल बी रिपब्लिक एज वेल एज इंडिपेंडेंट. Okay, so the eighth session, the fifth session was from 14th to 30th of August, then 27th of January 1948, a single day session, the sixth session. Like, and ये sessions क्या है? आप पार्लियामेंट के सेशंस तो देखते ही होंगे, द मॉनसून सेशन, द विंटर सेशन. What are these? It similarly the session of Constituent Assembly. Constituent Assembly was also acted as Parliament of India, the first Parliament of India. Constituent Assembly Parliament ही तो है. Later the Constituent Assembly became the Parliament of India. So all these sessions are just like the Parliament of India is not in session always. हमेशा session में नहीं होती है. So the Parliament of India sits in session in particular spheres like the monsoon session, like the summer session, like the winter session, which is soon going. Winter session अभी start होने ही वाला है. Similarly, there were different sessions of the Constituent Assembly. It took a total of 11 sessions. The ninth session was from 30th
to 8 July to 18th of September. 6th to 17th of October was the 11th 10th session, and the 11th session was on from 14th to 26th of November 1949. 26th November is the date on which the draft constitution was finally approved. So इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग स्टेजेस के थ्रू इवॉल्व हुआ. इन द फर्स्ट स्टेज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बताया. मींस व्हेनेवर वी आर डूइंग समथिंग, वी आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट, वी शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव कि हम इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को, हम इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्यों बना रहे हैं. दैट इज द ऑब्जेक्टिव, एंड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेटर केम टू बी नोन एज प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हर लॉ में प्रीएम्बल होता है. द आईपीसी हैज इट्स ऑन प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हैज इट्स ऑन प्रीएम्बल, बट प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. So objective resolution that was introduced by Jawaharlal Nehru, that stated all the objectives that need to be fulfilled in making of the constitution. That objective resolution came to be known as preamble of the Indian constitution. After the various committees were formed, ऑब्जेक्टिव्स बताने के बाद इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग छोटी छोटी टीम्स बनाई गई. दैट वर द कमिटीज. इन टीम्स का काम था अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना. Sir B.N. Rao, who is a very important person, he has been judge at the International Court of Justice. He has been Prime Minister of Jammu and Kashmir. He has been the legal advisor to the Constituent Assembly as well. He had been the Constituent advisor to the Constituent Assembly. Sir B.N. Rao, on the basis of various reports and discussion of the different committees, prepared a draft constitution. Draft prepare kiya Sir B.N. Rao ne, which was sent to the drafting committee for further scrutiny. The draft received by the Constituent Assembly was circulated to the public for suggestions. जो ड्राफ्ट रिसीव किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो पब्लिक में सर्कुलेट किया गया सजेशन के लिए. एंड आफ्टर, बिकॉज इंडिया वाज गोइंग टू बी अ डेमोक्रेटिक नेशन, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, दैट्स व्हाई द पीपल वर आस्क्ड, सजेशंस वर invited from the people of India, and बहुत सारे suggestions मिले. According to that, there were changes made in the constitution. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिबेट भी स्टार्ट किया. यू कैन रीड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट दैट आर स्टिल अवेलेबल ओवर द वेब, इंटरनेट पर है. So the draft was resubmitted, and Dr. B.R. Ambedkar, the assembly started the debate on each and every clause. After the debates, the draft constitution underwent a second reading. A total of 3 readings were gone through. ये भी क्वेश्चन आ सकता है that total कितनी रीडिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की before the draft was finally approved. So 3 readings. There was a second reading, and in second reading, the suggestions were discussed, and most of the suggestions were rejected. Finally, third reading हुई, और थर्ड रीडिंग हुई 26 नवंबर 1949 को, आफ्टर विच द असेंबली वोटेड टू पास द मोशन दैट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड प्रपोज्ड इन द प्रीवियस स्टेज. सिंपली आप आज भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सेशंस होते हैं, सेशंस में मोशन होते हैं, एंड मोशन या तो अप्रूव होते हैं, रिजेक्ट होते हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड जस्ट लाइक द प्रेजेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. फाइनली 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फाइनल ड्राफ्ट को साइन किया गया बाय 284 मेंबर्स आउट ऑफ द 299 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो out of those 284 members, the first person to sign is very important. The first person to sign is Dr. Rajendra Prasad, the President of India, who is also known as President, is known as the first citizen of India. And the last person to sign is, the first person was Dr. Rajendra Prasad. आप अभी भी प्रेजेंट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आप बेयर एक्ट देखते हैं, इट इज नॉट लाइक इट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी है आर्ट्स हैं, बहुत सारे उसमें ड्राइंग्स हैं, एंड द बेसिक द फ्रंट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर राम दरबार बना हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड एट द एंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सिग्नेचर्स हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first person to sign the constitution. The first person मीन्स वहां पर ड्राफ्ट में सबसे पहला साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, एंड द लास्ट साइन इज ऑफ फिरोज गांधी. फिरोज गांधी was the last one to sign. So in that whole particular page जहां पर सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स के सिग्नेचर हैं, द फर्स्ट सिग्नेचर इज ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द लास्ट सिग्नेचर इज ऑफ फिरोज गांधी. ये दोनों ही नेम्स इंपॉर्टेंट है. द क्वेश्चन में आस्क्ड दैट हु वाज द फर्स्ट पर्सन to sign the constitution, who was the last person to sign the constitution. No, you know both. Let's discuss some sources of Indian constitution. So guys, as it is said that Indian constitution is a bag of borrowings. Bag of borrowings.
because Indian Constitution is the bag of borrowings. That's why we need to know the sources of the Indian Constitution कि ये कहाँ से लिया गया है. So the major source of the Indian Constitution is Government of India Act 1935. Government of India Act 1935, from where we got center-state relations, executive function, rules of judiciary, and emergency provisions. Then comes the American Constitution, the Constitution of USA. वहां से हमने fundamental rights लिए, the Bill of Rights, impeachment of president, concept of judicial review, and removal of Supreme Court and High Court judges. It is taken from the American Constitution. The Irish Constitution, from Ireland, we have taken DPSP. DPSP are non-justiciable rights of the citizen of India, non-justiciable right of the people of India given in Part 4, and election of the president. The procedure of election of president had also been taken from Ireland. From British Constitution, we took the writs, the five types of writs: habeas corpus, certiorari, probation, quo warranto, and mandamus. Rule of law. Yes, there is a concept of rule of law in the Indian Constitution. I will teach you it. Citizenship. There is single citizenship India, and India में single citizenship है, dual citizenship नहीं. Just like the United Kingdom. Bicameralism means two houses of parliament, lower house and upper house. Bi means two. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं. ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव टेकन जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड कंकरेंट लिस्ट. एंड वन मोर थिंग वी हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, which is one of the fundamental right in the cluster of six freedom rights in article 19 1g. article 19. जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव टेकन द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. In emergency, the procedure through which the fundamental rights are suspended is taken from Germany. And from Russia, we have taken fundamental duties that were added later on. पहले तो सिर्फ rights दिए गए थे citizens को, but later on it was thought by the people, by the Parliament of India, by the leaders, by the government, that there shall be duties as well over the people. And in Article 51A and in Part 4A, fundamental duties were added in the Indian Constitution. Fundamental duties में भी एक amendment हुआ है. When right to education was added as a fundamental right, a fundamental duty was also added of the parents and guardians to get their child educated, because for every right there is a corresponding duty. If I have a right, then you have a duty, and if you have a duty, if you have a right, then I have a duty. From the Russian Constitution, we took fundamental duties. I hope you are clear about the introduction to constitutional law. We are going to discuss in detail about each and every important concept of constitutional law, like fundamental rights, like DPSP, like preamble, and also the relation between fundamental rights and DPSP. I hope you guys liked the session. With this, let's end. And before ending, let me inform you that Easy Legal 1 year comprehensive program had been launched on Unacademy on 3rd of November. It's a bilingual course, a 1 year program for CLAT 2022. You may enroll for it. Let's crack Law 1.0. It's a beginner's batch for CLAT 2023. It is going to be launched today on 5th of November. So do enroll for it if you are preparing for CLAT 2022. It's a 2 year program. We will teach you from the basic foundation. Aim high. If you cannot aim high, you cannot achieve high. So yes, this Aim High course is the repeaters batch course for CLAT 2022, as the name is itself suggesting, for those students who are aiming high, who are droppers, but who are not stoppers. आप droppers हैं but stoppers नहीं हैं. You are not a stopper, you are just a dropper. Believe me, you are going to be the next stopper. You are going to be the next topper, and to make you topper, to take out the topper from you, to take out the topper within you, we have come up with this repeaters course. It was launched on 1st of November. There is no backlog of syllabus right now. It's a bilingual course, a 1 year program. You may enroll for it. The bugs bounty, I hope you know it. If there is any inappropriate content in the video, in the class, you may report it and win exciting prizes. Thank you guys. Please subscribe to the channel, hit the bell icon, like and share. Bye bye.